Hello, are you guys there? Yes, sir. Okay. Uh, yeah. So a few more. So Linux virtualization includes its own hypervisor called the kernel-based virtual machine, which supports Intel and AMD's virtualization processor extension. So you can create x86-based VMs from within a Linux host OS. Okay. We were talking about always Windows pay Linux, but the other way around is also possible. So we can create x86 architectures based VMs on a Linux machine. Okay, Linux host OS. As an open source OS, Linux is highly customizable. You can create VMs running versions of Linux tailored for specific workloads or security hardened versions for more sensitive applications. So within Linux, you can have multiple CentOS, Red Hat, etc., etc., MintOS. Then you have the Ubuntu OS, different types of OS on the Linux virtual machine itself. Okay. Cloud, as noted about the computing model depends on virtualization by virtualizing servers, storage, and other physical data center resources. Cloud computing providers can offer a range of services to customers, including the following: infrastructure as a service. So, what do? They give you virtualized server, storage, and network resources you can configure based on their requirements. Platform as a service, virtualized development tools, databases, and other cloud based services that you can use to build your own cloud based applications and solutions. Then there is software as a service. You can software applications you can use on the cloud. Is the cloud based service most abstracted from the hardware? Example of IaaS is the storage virtualization that I just told you. Platform one is the, for example, the OS on which you are building it. Okay, or Sir, the, and yeah. sir, your screen is not visible. Oh, sorry. Okay. So infrastructure as a service में storage is an example. Platform में you can say database or development tools. So for example, एन एनवायरनमेंट जिसमें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रन होते हैं तो उसके लिए क्या लगता है यू लगता है लाइब्रेरीज लगता है इंटरप्रेटर लगता है कमांड लाइन लगता है तो ये सब प्लेटफॉर्म है जिस पे तुम अपनी सी प्लस प्लस फाइल्स रन करोगे वो एज अ सर्विस देते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज लाइक ये पीपीटी का जो एग्जांपल मैंने बोला था ठीक है सो पावर पॉइंट रहेगा और वो तुमको डेटा सेंटर से इट विल virtualize it and give you the application तुम्हारे पीसी पे वो एप्लीकेशन नहीं होगा बट व्हेन यू गो ऑन office.com in the browser you will be able to use it तुम्हारी फाइल्स वैसी की वैसी होंगी एप्लीकेशन अप टू डेट रहेगा सब so that is what you get in software as a service. Okay. I have forgot to switch on the recording. I thought automatic hai. So I'll just quickly go through all the types of virtualization. A recap. I will go through the main ones. Okay. uh, and Baki, then I think you're free to go since you guys have exam. We'll take the next topics tomorrow. So the main virtualization was desktop, network, storage, data, application, and data center. Okay, the last four are and cloud virtualization. These three in between are okay, not so much that you would come across. ऐसा नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं बहुत काम इसमें होता है या बहुत काम करते हैं या तुम्हारे जॉब इंटरव्यू में या काम में इसका बहुत ये आएगा वर्क आएगा या फिर इस पे तुमको काम करना पड़ेगा ओके बट द अदर्स डेस्कटॉप नेटवर्क स्टोरेज डेटा एप्लीकेशन डेटा सेंटर एंड क्लाउड आर अ मस्ट ओके तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में एग्जाम्पल क्या था देर आर टू टाइप्स आई एम जस्ट रिकैपिंग इट ओके फॉर द रिकॉर्डिंग इसके अलावा भी अगर इफ रिकैप समझ में नहीं आया एंड यू हैव डाउट स्पेसिफिकली विल just let me know, we'll take another separate session for it. Okay, I won't be including it in our regular sessions. I'll take a separate session for it. Okay, so what was the first one? So as is the desktop virtualization, two types. One is, sorry,
one was VDI, okay, virtual desktop infrastructure. One is VDI, virtual desktop infrastructure. The other is local desktop. Okay, so इसमें कैसे होता है? There is a central server and they give you desktops on your PCs. Okay, so there is a server. This server has different sets of desktops. Okay, and they are given to their owners or their or different PCs. So it's like I am here. Okay, Kuber, Kunal, and you guys are here. So we go on a central server, we log in, and we each of us get our own desktop. Okay, we don't have a hardware, physical hardware give issued to us by anyone. तो एक साइबर कैफे में जाओ, वहां पे www डॉट ये सर्वर का नाम डालो एंड देन यूल गेट योर ओन डेस्कटॉप. लोकल में कैसे, जो अभी लोकल में इट्स योर ओन लैपटॉप जो तुम्हारे घर पे है, उस पे तुम हाइपरवाइजर डालते हो एंड उस पे यू आर रनिंग अ Linux VM. Okay, that is local desktop virtualization. These are the photos. It will be better to understand. So एक service center है and it is sending the desktop to the different PCs. Okay, local में as you see at the bottom, if you see, this is a Windows PC on which I am running a Linux desktop. Okay, next, network virtualization. There is two types. Okay, one was network function virtualization and the other is SDN. SDN में क्या होता है? You virtualize the network control plane. Basically the decision making part is virtualized. जैसे कि मैंने कहा था, so अगर there are multiple routers, ठीक है, जो हर कोई अपना डिसीजन खुद से लेता था, अब SDN के थ्रू क्या होगा? They all are virtualized into a single plane, platform, router, जो भी तुमको बोलना है, और यहां से मैं इन चारों को कंट्रोल कर रहा हूं. ठीक है, so the control वाला पार्ट था उसको virtualize किया and instead of individual control, the control now lies with a central server. फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में जैसे फायरवॉल का दिया था, एवरी वन ऑफ यू हैज इट्स ओन फायरवॉल. ठीक है, ईच पीसी हैज इट्स ओन फायरवॉल. बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डू, तो मुझे कितने लगेंगे? 4 फायरवॉल्स लगेंगे, राइट? सो नाउ व्हाट आई डू, आई वर्चुअलाइज इट. ठीक है, वंस आई वर्चुअलाइज इट, अब मुझे क्या लगेगा? सिर्फ एक फायरवॉल लगेगा. ओके, this is the firewall and the PCs are connected to it. Okay, the PCs get connected to it. If you do it virtualization locally, so the thing is ki same rules get applied to all PCs. Okay, in cloud environment you can have single firewall but different rules for different PCs. Okay, this is network. Storage, I told you this example. Yeah, this example over here, like physically there are 4 servers, सबकी 100 GB है, but with the help, when you virtualize it with the help of software, वो पूरा एक बन जाता है and हमको जब दिखता है, ठीक है, online, तो it shows like 400 GB and each of us can use some part of it as required. Okay, that is possible because of storage virtualization. So instead of buying the storage, like hard disk, suppose अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है लेकिन तुमको चाहिए 1 TB एंड 200 GB, अब ऐसी तो कोई हार्ड डिस्क आती नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल बाय 2, और वो 800 GB था वो वेस्ट हो गया, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू वर्चुअलाइज इट. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, someone has bought a huge machine, a huge storage hard disk like 10 TB, and you take some part of it. Okay, that's what storage virtualization is. Data virtualization, so the restrictions of format and different sources using it is removed. ठीक है, तो कैसे होता है कि जैसे different types होते हैं, JSON, PNG,
इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट डेटा होता है, स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये सारा डेटा जो अलग अलग है उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मेट दैट इज रिमूव। तो जब वो ये डेटा एक्सेस करना होगा किसी को, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो दिखाया है बिजनेस इंटेलिजेंस, उसने क्या किया, उसने क्वेरी रन की, show me the maintenance history of machine so and to second sensor readings। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स, कनेक्टेड व्हीकल्स, इन सबका डेटा अलग होता है, अलग फॉर्मेट में होता है, अलग स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, एवरीथिंग इज देयर। सो डेटा वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, द रिस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड, द डेटा बिकम्स ओनली डेटा वॉट एवर फॉर्मेट इट इज एंड इट इज गिवन टू दिस क्वेरी। तो उस क्वेरी का रिजल्ट फिर एक लाइन में सबको इन जनरल दिखेगा, जैसे आई अगेन शोड इट टू यू हियर। Okay, this is the query. In one single line, you will see different types of data showing your query result. Application virtualization, ये अपना इसका PowerPoint वाला लाइक, ओके, लोकल एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, मेरा विंडोज मशीन है, उस पे हाइपरवाइजर है एंड उस पे एक वीएम डाल के मैंने पावरपॉइंट चलाया है लिनक्स में, ठीक है। देन देयर इज एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग, जिसमें सिर्फ कंपोनेंट स्ट्रीम होता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन मुझे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। अगर मुझे और चाहिए तो आई रिक्वेस्ट देम, आई मेक अ रिक्वेस्ट कि मुझे ये और भी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो सर्वर से तुम्हें दिए जाते हैं। इट इज नॉट ऑन योर ओन पीसी, ठीक है, इट इज ओवर दी इंटरनेट एज यू कैन सी ओवर हियर। इंटरनेट से फिर मशीन में आता है एंड यू कैन यूज द कंपोनेंट्स, ओके। लास्ट वाज व्हिच सर्वर बेस्ड, कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही सर्वर पे होता है। तुम www.office.com पे जाओगे, साइन इन करोगे और तुम्हारे जो भी एप्लीकेशन है यूज करोगे। इसमें से कोई भी एप्लीकेशन तुम्हारे लैपटॉप पे या तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं होता, ये सब सर्वर पे होता है। द ओनली थिंग यू डू इज यूज इट, दैट्स व्हाट एप्लीकेशन इज। डेटा सेंटर इज लाइक रिलेटेड टू क्लाउड, जो मैंने बताया। बहुत सारी एप्लीकेशंस और हार्डवेयर होता है, बड़े बड़े होते हैं जो वर्चुअलाइज किए जाते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर आता है, यूजर आता है, जो भी डिमांड करता है उसको वो दिया जाता है, राइट, दैट इज डेटा सेंटर। सीपीयू, जीपीयू इज थियरी, you can go through it when I give you the PPT। and cloud virtualization again similar to data center virtualization। तो इसमें कैसा होता है, तुम्हारा पूरा सेटअप, okay, let's imagine you have a company and your entire setup is moved to cloud virtualization, ठीक है। सारा कुछ ऑन प्रेमाइस से हटाकर क्लाउड में दिया जाता है। तो उसमें तुम्हारे सारे फॉर एग्जांपल पीसीज, राउटर, स्विचेस, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जाएंगे। प्लेटफॉर्म में तुम्हारे डेटाबेस जाएंगे, तुम जो डेवलपमेंट टूल्स यूज करते हो, एक्लिप्स फॉर एग्जांपल, जिसमें तुम कोडिंग करते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियोज, ठीक है, ये भी एक टूल है डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो अलग अलग टूल्स हैं वो भी तुमको क्लाउड देता है। मतलब क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास कोई पीसी है नहीं तो ये एप्लीकेशंस डालने के लिए कोई जगह है नहीं, बट यू कैन, जैसे मैं office.com पे गया था, वैसे www.virtual विजुअल स्टूडियोज पे जाके तुम ये सब कर सकते हो। तुम्हारी फाइल्स वहीं पे रहती है, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारे एप्लीकेशंस वगैरह सब वहीं पे रहेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अगेन द पावर पॉइंट एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, कि मेरे अभी ये लैपटॉप पे ये जो दिख रहा है आइकॉन, दिस इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ओके। इंस्टेड आई कैन ऑल्सो एक्सेस इट बाय गोइंग टू वेयर, office.com। यहाँ जाके साइन इन करके आई विल गेट इट, I will get my PPT, I will get this file, I will get what I'm showing you। The difference being कि वो मेरे पीसी पे यहाँ पे जैसे stored है वैसे नहीं होगा। This is on my local hard disk। In cloud virtualization software as a service, that software will be with Microsoft Data Center USA में कहीं तो होगा, यहाँ पे मेरे पीसी पे तो नहीं है, okay। Some other parameters of virtualization include multi-tenant versus single tenant, practice models, pricing models for VMs, pay-as-you-go, transient spot instances, reserved instances, dedicated hosts, choosing a virtual machine provider, security, benefits, okay। These parameters of virtualization are for self-study, okay। तुम खुद जाओ, इसको रिसर्च करो कि what they are, what they mean, okay, what
information do they give you, they have, or you should use. ठीक है, इसमें theory part है, explain करने जैसा कुछ है नहीं. That is why this is self study and research purposes. Okay, so I'll just paste it in the chat so that you get access when you come back, और recording में भी होगा ताकि pause करके तुम इसको देख सकते हो. Okay, like I said, sorry I did not start the recording from the beginning. So if you have any doubts, please mail me or ping me. We can have a separate session in clearing your doubts. Otherwise, I just gave you a recap of what the different types of virtualizations are. उसमें से समझ रहा है तो well and good. Okay, that's it for now, and all the best for your exams. Are you guys there? Is there anything, or should I just end the meeting? Okay. Thank you, sir. Okay, great. Thank you, sir. Thank you.